Yes, my dear book buddies, what's up? Hello, 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 hello. Good evening. What's up? मुझे ये बताएं कि you saw my video on the harmful effects of phone or not? आज जो दोपहर को मैंने वीडियो पोस्ट की है कि स्मार्टफोन किस तरीके से आपकी जिंदगी का दुश्मन बना हुआ है, वो आपने देखी है या नहीं? एंड आर यू एडिक्टेड? आपने वो स्मार्टफोन कंपल्शन टेस्ट लिया कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू टुक एंड व्हाट वाज योर स्कोर? तो क्या आप वाकई में इस अपने स्मार्टफोन के नशे में मुब्तला हैं? आर यू एडिक्टेड विद योर स्मार्टफोन और नॉट? रिजल्ट क्या कहता है? अगर 8 से ज्यादा यस है तो यू आर एक्चुअली एडिक्टेड. Please make a video on the education system of okay. So people who have score more than 8, they need to they are addicted actually. So they really need to work on making their lives better. कुछ लोगों के 8 हैं, 8 4. अच्छा, मेरी जो रूल बाय फियर की सीरीज है अक्सा, वो तो मैंने कंप्लीट कर ली है. रिकंस्ट्रक्शन की सीरीज की 4 वीडियोस हैं. इनफैक्ट आई वाज टुडे वर्किंग ऑन ड्यूरिंग द डे. मैंने 1 घंटा लगाया उस वीडियो के ऊपर. But I need to spend at least 12 to 15 hours more on one video of reconstruction. So hopefully I'll be able to complete it in the next month or so. Okay, if you're using phone to earn money, that's okay, but don't use it to scroll unnecessarily through the social media field. There is nothing like free lunch in this world, Lala Chauhan. प्लीज पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पे तो मैंने बहुत बात की है, बट आई विल टॉक मोर ऑन दैट. Jazz, very hilarious. What do you think about 12 Rules for Life, Josefa? Brilliant book. I have already reviewed it. It's a great book. उसका जो पहला रूल है ना, stand up straight with your shoulders back. That's an amazing. I follow that. Starting the 1 month activity from tomorrow. Very nice. AK. Very nice. So who are the people जिन्होंने वो वीडियो देखी है and they will apply the 30-day plan to get themselves free of the mobile phone addiction? Five classic novels that haunt you continuously. Yeah, I don't read novels anymore. मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट लॉलिटा है. नथिंग लाइक इट. नो नॉवल कैन कम क्लोज टू लॉलिटा. सर, एटॉमिक हैबिट्स वाली बुक पे बात करें. एटॉमिक हैबिट्स का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ. इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड ऑन द सेल्फ हेल्प लिटरेचर जॉनरा. एंड ब्रिलियंट बुक. उसका जो मेन थीम ये है कि अक्सर लोग अपने जिंदगी में गोल्स नहीं बना पाते. लोगों को समझ नहीं आती. मुझसे भी जब लोग मिलते हैं अक्सर, वो कहते हैं सर वी आर नॉट एबल टू मेक आवर गोल, सो व्हाट शुड वी डू?
So I always tell them, if you're not able to make goals, then please work on developing habits. Your habits will take care of everything. अच्छा जी, एनिमल फार्म के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव ऑलरेडी reviewed Animal Farm, and you can watch my review in my YouTube archives, so you'll have an idea what Animal Farm is. पाकिस्तान की सिचुएशन है वो, that is apt with Animal Farm. एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा. शाहनामा का रिव्यू कहाँ गया? शाहनामा का रिव्यू तो मैंने पीटीवी पेपर पर भी किया था, और मैंने मेरी आर्काइव्स में भी है, शाहनामा मौजूद है. Why people don't talk about new ideas, and those having new ideas are not supported by anyone in Pakistan? Because there is lack of originality of thought. That's the fight that I'm fighting, because there is lack of rationality of thought. लोग सोचना नहीं चाहते, लोगों के अंदर शऊर नहीं है, लोगों के अंदर हायर कॉन्शियसनेस नहीं है. People oops, hello जी, आवाज आ रही है अब आपको? आई एम सॉरी, आई माय माइक वाज म्यूट, सो प्लीज लिसन दिस केयरफुली. हमारे यहाँ ओरिजिनल, किसी ने सवाल पूछा कि हम लोग सोचते क्यों नहीं है. सो इसका आंसर ये है कि हमारे यहाँ ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट नहीं है. ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट नहीं है, नॉवेल्टी नहीं है, नई सोच को लोग encourage नहीं करते. उसकी 3 बुनियादी रीजंस है मेरे ख्याल से. एक है मुल्लायत, एक है मलूकियत, और तीसरी है खानकाहियत. मुल्लायत क्या है? ये जो मुल्लाइज्म है, जो आपको सोचने नहीं देता, जो तकलीदी सोच पे चलता है. दे नेवर प्रोपेगेट डाउट, दे डू नॉट वांट टू क्वेश्चन एनीथिंग. उनको जो तकलीद, जो आज से 200 साल पुराना या 1500 साल पुराना या 500 साल पुराना जो उनको बताया गया, वो बस उसी पे लगे रहते हैं. हालांकि इस दीन इस्लाम के अंदर इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, राइट? एंड द कुरान इटसेल्फ प्रोपेगेट्स कि रैशनल थिंकिंग करो, प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखो, अपनी इंडिविजुअलिटी को वैल्यू करो. मैं इनफैक्ट आज ही कुरान मजीद की 3 आयतें देख रहा था जो इंसान की इंडिविजुअलिटी के ऊपर बात करती हैं. चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 30, एंड चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 72. ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से खुदा ने, अगेन, हम जो कुरान भी हमें जो पढ़ाया जाता है, हम लोग पहली बात तो पढ़ते नहीं है उसको तर्जुमे के साथ. हम सिर्फ एक एक रस्म है, उसको पूरा करते हैं. जब तक हम कुरान को समझेंगे नहीं, उसकी मॉडर्निटी, कुरान की जो मॉडर्न सोच है उसको नहीं समझेंगे, हमें कभी भी बात समझ नहीं आएगी. सो मुल्लाइज्म जो तकलीदी सोच रखते हैं, मलूकियत मींस मोनार्की, एंड खानकाहियत मींस द मॉनेस्ट्री. ठीक है, जिसमें हम एक ही किस्म का निसाब, एक ही किस्म की सोच, पहले बाप, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसी सोच को फॉलो करते हुए आते हैं. वी डू नॉट थिंक ऑफ समथिंग न्यू.
याद रखें, डाउट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स wisdom. Doubt is the first step towards knowledge. So if we do not doubt things, we will never be able to move forward in life. Book recommended for me. जीशान अहमद, आप पढ़ें 20,000 Leagues Under the Sea. मोहसिन आमिद की मैंने बुक बहुत अरसा पहले पढ़ी, बट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट. सेपियंस का रिव्यू इज ओवरड्यू. आई मस्ट डू सेपियंस. दैट इज ओवरड्यू. No, I have not read Agency Rules. Sir, is reading fiction a waste of time? Okay, Haris. इसके ऊपर अक्सर लोग मुझे कभी कभी मुझे क्वेश्चन करते हैं. देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 18 साल की उम्र तक आप फिक्शन पढ़े, ठीक है. इट हेल्प्स यू डेवलप योर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट, इट हेल्प्स यू bolster your creativity, it helps you nurture your mind, it helps you make a visual imprint or visual image of what you are reading. 18 साल की उम्र के बाद इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहां पे यूथ नीड्स टू स्टैंड अप, पीपल नीड टू बी एजुकेटेड, पीपल नीड टू हैव रैशनैलिटी ऑफ थॉट. तो मेरी ये एडवाइस है, ये मेरा पर्सनल रूल है कि 18 साल के बाद एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों को फिक्शन नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है. उनको उनको वो किताबें पढ़नी चाहिए जो उनकी जिंदगी में बेहतरी ला सके. इट कैन बी हिस्ट्री, इट कैन बी classics, it can be personal development, it can be political science, it can be philosophy, it can be psychology. Okay, so that's my personal advice. गुड क्वेश्चन. हाउस होल्ड हेल्पर्स का मेरी जिंदगी का हमेशा एक रूल रहा है, एंड इट माइट साउंड रूथलेस. देखें, आप एक एज तक अपने दोस्तों के साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, फिर आपको लगता है कि यू हैव आउटग्रोन देम, या उनके इंटरेस्ट आपसे मिलते जुलते नहीं है, या दे हैव बीन फ्रोजन इन टाइम, वो वक्त में कैद होके रह गए हैं. वो आज से 10 साल पहले जो कर रहे थे वो आज भी वही कर रहे हैं. सो आई ट्राई टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम देम, बिकॉज फिर वही सोच, वही 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बातें. देखें, ये प्रोग्रेस नहीं शो करती. इंसान की प्रोग्रेस यही होती है कि वो अपने आइडियल्स को आउटग्रो कर जाता है, वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, and he makes new friends and he makes new associates, and even if there are no friends, you keep on moving ahead in life. So anyone, my advice is anyone who's aligned to your vision, he is your friend, he or she is your friend. ये कौन सा फ्लेवर है जूस का? ये मैंगो फ्लेवर है, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है. People give very funny comments, eh? Suggest only one book to succeed in life. Think Again by Adam Grant. Rationality by Steven Pinker. I've given you two. I really enjoyed Reader's Answer, and the Liberty Book discount helps out a lot. Thank you, Ahmed. Very happy to hear that. Juices are also harmful. I want to read English books. Okay. I recommend a lot of books, my friend, on my channel. आप मेरे channel पे जाएं, आपको within a matter of half an hour, you can get at least 10 to 12 recommendations. But if you want to start off, then read Animal Farm, and you will relate it to the situation in Pakistan today. What is the experience about life? Life is a beautiful struggle. Love from India, Ayush Bhatt. Thank you, Ayush. Vocabulary improve करें by reading newspaper, make a diary, write down the meanings,
explain the word in a sentence, and have a conversation around those words with your friends and family. Ryan Irfan, I have already made a video about procrastination and it's a very detailed video. उस वीडियो का नाम है Eat That Frog. So you can watch that video on my channel. How many books do you have? I think maybe over 1,000 books. And I think you're the only Pakistani YouTuber who makes books related content. I don't know. I haven't seen much, but I feel great to be in this position. Sir, why all the news telling that Pakistan going to default? Pakistan will not default. Don't worry. Do you plan on writing another book? In fact, I've already started writing my new book. But I'm very, very busy. I have too many irons in the fire these days. So I I hope to complete it by end of this year. Seems a difficult task, but let's see. Zara Kazi, yes, I just spoke about what you just said. I've noticed that sometimes you say not to read fiction after 18. Why is it so? Zara Kazi, I think you've joined late. I just explained the reason behind why I say so. सर मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना चाहिए बिल्कुल जाएं आउट ऑफ कंट्री गेट द एक्सपोजर ओके मैंने वीडियो न्यूज़पेपर के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है डू यू रीड विम्पी किड आई डू नॉट रीड इट एनी मोर आई रेड इट व्हाइल आई वाज अ चाइल्ड ये सब बुक्स आपने पढ़ी हैं जी ऑलमोस्ट 80-85% इसमें से सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं कूल नाइस थॉट जीशान अहमद गुड मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ बैतुल हिकमा की हाउस ऑफ विजडम जो खलीफा अल मामून ने 8th सेंचुरी में बगदाद में एस्टैब्लिश किया था वहां पे यही होता था पीपल यूज्ड टू कम स्कॉलर यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू हैव अ डिस्कोर्स एंड दे यूज्ड टू हैव a very healthy discussion around things. Sir, what's next after Readistan? Should we read the 50 books mentioned or should we venture beyond? Of course, venture beyond. Of course, move ahead. What are your thoughts on 48 Laws of Power, Akriti Mishra? Akriti, I've already done a review on that book, and it's part of in fact, my book as well, Readistan. And I'll just explain you my thought on it. It's a brilliant book. It's an absolute game changer. It's vicious. It's it's very shrewd. It's very clever. It's very pragmatic. It's very, very practical. It's very, very dynamic. And it takes out the evil inside you and it takes out the good inside you as well. So I rate it as one of the best books of all time in terms of the self-help genre. Can I invite you for guest speaker session in my university? Yes, Sumera, you can, but the audience needs to be. I only go to the universities जहाँ पे audience minimum at least 100 लोग अपना auditorium में मौजूद हों. ठीक है, so फिर मजा भी आता है. So if you can gather 100 people, I'll surely come over. अच्छा जी. What is stopping our country from prosperity? Mediocrity is stopping our country from mediocrity. Lack of originality of thought, lack of novelty, तकलीदी सोच, पुरानी सोच, and refusal to move ahead with the world. These are 5 things that I can think of off the cuff. Mashallah, following you from past 3 years, and if people take the channel, they will follow all the hidden purposes. Thank you, Asad Mehman. Thank you. पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई बुक आई डोंट रिमेम्बर अभी मुझे ये ज़हन में नहीं आ रहा आई स्पेंड नॉट मोर देन 1 hour एवरी डे इन रीडिंग आई डोंट स्पेंड मोर देन 1 hour और भी बहुत काम होते हैं सो मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ हैव यू मेड अ रिव्यू ऑन लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आई थिंक मैंने पीटीवी पे किया था इसका रिव्यू आई थिंक मैंने पीटीवी के ऊपर किया हुआ इसका रिव्यू जस्ट चेक माय आर्काइव्स आई डोंट रिमेम्बर इट again, it's written by Robert Greene. One hell of a book. One brilliant book it is.
सर डू यू थिंक पाकिस्तान में सियासी को डिस्कशन को हार्श से महजब की तरफ ले जा सकते हैं, काइंड ऑफ ब्रदरली पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज ऑलवेज विशियस, लेकिन all the people who are part of this conversation and who will listen to this conversation after this is posted, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है. आप टीवी देखते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज देखते हैं, हर रोज एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम लग जाती है. अब इमरान खान को बलूचिस्तान की पुलिस पकड़ने जा रही है, अब उसको रिलीफ मिल गया, अब वो औरत मार्च आ गई, वो औरत मार्च में एक बदतमीजी का माहौल चल रहा है, वो जानबूझ के लड़ रहे हैं, प्रोवोकेटिव सवाल हो रहे हैं वहां पे, खवातीन के प्लैक कार्ड्स. हर रोज कौम को बेवकूफ बनाने के लिए एक नया मुद्दा निकाल देते हैं. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है, मेरे चैनल के जो भी फॉलोअर्स हैं, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस. ना पॉलिटिक्स में अपना वक्त वेस्ट करें और ना ये फजूल की नॉनसेंस में अपना वक्त. बी वेरी सेल्फिश अबाउट योरसेल्फ. ठीक है, आपका टाइम जो है ना, यो टाइम इज गॉड. ये कुरान मजीद में दहर का जो कॉन्सेप्ट है, वक्त की कदर करो क्योंकि वक्त खुदा है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वैल्यू योर टाइम. अपने टाइम को वैल्यू करें. अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं अगर आप लोगों को वर्थ वाइल नॉलेज दे रहा हूं, मेरी बात से अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो मुझे सुने, वरना यू डोंट इवन नीड टू लिसन मी. मेरी वीडियोस को देख के आपको नॉलेज मिलती है, आपकी पर्सनालिटी में कुछ बेहतरी आती है, यू फील गुड, you feel that you have gained something, you have gained some knowledge, and I can bring some betterment in your life, only then subscribe to me. If I don't live up to your expectations, unsubscribe me. अपनी जिंदगी को भी ऐसी ruthless बनाए. Don't waste your time in politics. Don't waste your time in any nonsense thing which doesn't add any intellectual value to your thought. ठीक है? So अपने बारे में सोचें, अपना कमाएं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें, पढ़ें लिखें, नया नॉलेज, नई स्किल सीखें, बाहर ट्रैवल करें. So there are n number of things you can do rather than wasting our time in politics. पाकिस्तान गैरिजन स्टेट में बुक नहीं पढ़ सका अभी तक. ओके, बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं. मिस और What do you think about Walter Isaacson, the author? I loved his biography on Leonardo da Vinci and Steve Jobs, the best biographer in the world today. I've read all his books. Amazing. जो लियोनार्डो वाली बुक है ना, और जो आइंस्टाइन वाली बुक है, that is absolutely amazing. I love Walter Isaacson. Okay, Abdul Sattar. Thank you, Abdul Sattar. I do not focus for even 10 minutes of task. I divert so rapidly. Focus के ऊपर मेरी एक वीडियो है, The Power of Focus. Watch that. It will help you focus in life. If you get a chance to become education minister, will you accept it? If I get a chance to become prime minister, I'll accept it. Of course, if it comes with authority and I'll take the responsibility, I'll surely accept it. But my aspiration is much bigger. What did you study in uni? I studied business management. You look like yes, I am today. I'm very tired, but when I talk to you people, I feel great. Sir, history कहाँ से start करूँ? Start from Sapiens, Yuval Harari. But what history? Indo-Pak history, European history, American history, Southeast Asian history. What sort of history? In general, start with Sapiens. Amazing book. Sir, do you know Syed Muzammil Shah? No, I don't know the gentleman. You guys should sit together someday. Similar progressive mindset and love for books. Okay. I don't know the gentleman. The most favorite author of yours? Lot of authors. बिजनेस मैनेजमेंट में मुझे टॉम पीटर्स पसंद है. नॉवेल्स में मैंने आपको बताया व्लादिमीर नोबुकॉव मुझे पसंद है. जॉर्ज ऑरवेल मुझे पसंद है. एडम ग्रांट मुझे बिजनेस मैनेजमेंट और सेल्फ हेल्प में पसंद है. इकबाल साहब ऑफ कोर्स फिलॉसफी में मुझे पसंद है. रिलीजियस फिलॉसफी में इकबाल साहब मुझे पसंद है. उसके अलावा जिम कॉलिंस मुझे पसंद है अगेन बिजनेस मैनेजमेंट में. So there are lot of उर्दू में मुझे अशफाक साहब बहुत पसंद है.
थैंक्स फॉर recommending visualizing MBA in just 2000 rupees. It helps me a lot. So आपने 2000 रुपए में MBA कर लिया. The Art of Thinking Clearly. Yeah, I haven't reviewed that book. Who is a successful person in your opinion? Oh, good question. Success in the modern world, people tend to associate it with financials. Success, for me, it's a very very. But मैं आपको बहुत in a nutshell बता देता हूँ. There are several aspects to being successful. तीन चार traits हैं. एक तो personal success, professional success, relationship success, um, your self actualization success. So, financial independence is part of being successful. Realizing your potential. मेरे लिहाज से सक्सेसफुल शख्स वो है जो अपने पोटेंशियल को अपनी जिंदगी के अंदर समझ जाता है और उस पोटेंशियल को अपनी जिंदगी के अंदर मैक्सिमाइज करके ऑप्टिमाइज करके इस दुनिया से जाता है. वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बंदा है. लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और लॉज ऑफ पावर. 48 लॉज ऑफ पावर. Josh Kaufman, amazing guy. Uh, why has nobody told me this before? I think मैंने शायद इसका रिव्यू कर दिया already. Hmm. On opinion rational, of course. मेरे तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा people who follow me, they know me. I always propagate this thought कि हमारे मुल्क में rationality of thought होनी चाहिए. हमारे मुल्क में पॉजिटिव सोच होनी चाहिए. हमारे मुल्क में लोगों का प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए. मॉडर्न माइंडसेट होना चाहिए. मॉडर्न माइंडसेट से लोग समझते हैं कि वेस्टर्न सोच होनी चाहिए. मैं इसीलिए बार बार इकबाल साहब की बुक रिकमेंड करता हूँ. बिकॉज what you see is you need to have a blend of modern understanding of religion. मौलवियों से नहीं, ठीक है, मॉडर्न थिंकर से. मॉडर्न थिंकर्स लाइक सर सैयद, लाइक अल्लामा इकबाल, राइट, जिन्होंने दीन को सही मानों में समझा, कुरान के मैसेज को समझा. And then you, when you, once you understand their message and you align your life, you become unstoppable. Do you get depressed about country's ongoing situation? I think, Rabia, see, थोड़ी बहुत तो मुझे परेशानी होती है, लेकिन I see it as an opportunity. याद रखें, जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी में जितने मसाइल होते हैं, उतनी opportunities होती हैं. So I see there's a lot of opportunity in Pakistan because there's a lot of work to do. What are your thoughts about Zishan Usmani? Zishan Usmani साहब को मैंने एक दो दफा सुना है, and I think he's a very reasonable gentleman. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो. He's a very nice guy. I really like him. So उस्मानी साहब को मेरा मैसेज दे दीजिएगा अगर आप जानते हैं उनको तो. Please continue reconstruction series. Yes, I will continue. Which book of 2023 do you recommend? मेरे पास बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं अभी, वहां पे पड़ी हुई हैं. I'll recommend you in my posts. Are there any books on cars? I don't know. Do you think two nation theory was correct decision? Again, एक लाइव सेशन में मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि काफी डिटेल्ड आंसर है. I agree with, that's what I agree with two nation theory with a certain set of disclaimers जो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा. Yeah, I might learn Arabic. Yes, I might learn it. Art of Seduction, of course, I've read it. It's a good book. Not as good as Laws of Human Nature, but I like it. Something about money management and investments. Best book on this topic, Psychology of Money by Morgan Housel. Amazing book, life-changing book. It's a lifesaver. Yes, absolutely. इंडिया का जो रीबर्थ हुआ 1991 में, आफ्टर देयर इकोनॉमी ओपनड अप, दे हैव रियली flown off.
Your opinion? I don't know who is Sahil Adim. Book sale for up to 60% on any web, you know. No, I don't know. Most beautiful place in Pakistan for me is Makran Coastal Highway in Kawadar and Ormara. Over 2,000 books I've read. Read about world politics, read about history, read about geography, Shah Azam, if you want to venture into politics. Best advice for youth: read. One word: read. Have you been to? I have been to a couple of podcasts. One is in production and one is already. I had a very great time with Naeem Sikandar. उनके पॉडकास्ट पे मैं गया था and I had a great time with him. He's a great guy. I get all my books from Liberty Books. When detailed visit of your library? I don't know. Maybe soon. सर आप कभी टंडो मोहम्मद खान गए? यस, मैं गया हूँ. Nissan PD classes, Namra. Recommend a book on Quran and science. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, the best one. Career tips of business and management students according to industry standards and changing dynamics of the corporate world. Okay, here you go. If you want to be a successful business student, the courses which you have been taught, they might be relevant 5 to 10% of the times. Your degree and your relevancy will depend on how aware you are with the modern world. So a modern business graduate needs to be absolutely abreast of what's going on in the world. They should know current affairs, they should know politics, they should know history, they should know geography, they should know how business works. They should know about social sciences, they should know about how human behavior works, they should know about organizational psychology, they should know about consumer behavior. So all in all, a modern business graduate is an absolute beautiful blend of all these things. अब आप ये कैसे कर सकते हैं? ये आप सिर्फ नॉलेज, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और किताबों के जरिए कर सकते हैं. कोर्स की किताबें नहीं, वो तो आपने पढ़नी है अपना जीपीए बेटर करने के लिए, बट यू हैव टू वर्क ऑन extending your knowledge base, and you can do that through reading. Sir, your opinion on LGBTQ? I'll make a video about that and you'll get to know about my opinion. सर योर ओपिनियन ऑन वर्चुअल यूनिवर्सिटी? वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं आजकल वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. द कॉन्सेप्ट इज गुड बट आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ. सो आई हैवंट बीन अवेयर ऑफ व्हाट देयर प्रोग्रेस हैज बीन सो फार. आर यू लेफ्टिस्ट? इफ नॉट देन व्हाई? अच्छा, एक बात आप याद रखें, मुझसे लोग पूछते हैं व्हाट डू यू बिलीव इन. मैं किसी भी आइडियोलॉजी, आई एम नॉट ड्रिवन बाय एनी आइडियोलॉजी. ओके, एंड दैट्स वन ऑफ माय स्ट्रेंथ, क्योंकि मेरी ओपिनियन कभी भी बायस नहीं होती. द प्रॉब्लम विद पीपल फ्रॉम द लेफ्ट इज वो हर चीज को लाल रंग से देखते हैं. दे ऑलवेज सी कि हर चीज का सोल्यूशन कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, पीपल पावर है, पब्लिक प्रॉपर्टी है. याद रखें, जब भी आप जिंदगी में किसी आइडियोलॉजी से ड्रिवन होते हैं ना, तो आपकी ओपिनियंस, आपकी नजरों के सामने ना एक फिल्टर आ जाता है. आप सोशलिस्ट हैं तो सोशलिज्म का फिल्टर, आप फेमिनिस्ट हैं तो फेमिनिज्म का फिल्टर, ठीक है, आप लेनिनिस्ट है, आपके लेनिनिज्म का फिल्टर. सो ऑल ऑफ दीज इजम्स actually put a filter in front of your eye and in front of your thought. So whatever you think, it's according to the lens that works in your brain. So मैं किसी भी आइडियोलॉजी से ड्रिवन नहीं हूं. आई एम नॉट अ लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट. आई एम एन इंडिविजुअल जिसका बहुत ही ओपन थॉट प्रोसेस है, ठीक है, और वो थॉट प्रोसेस की जो जो कोर है, ओके, वो है मॉडर्न माइंडसेट, मॉडर्न नॉलेज, साइंस. और क्योंकि मैं कुरान को मैंने समझ के पढ़ा है, तो वो सब जो है वो कुरानिक थॉट प्रोसेस से अलाइंड है. ये जो सारी मॉडर्न नॉलेज है, आई एम अ बिगेस्ट एडवोकेट कि हमें सारी मॉडर्न, क्योंकि मेरे लिए दीनी नॉलेज क्या है? मेरे लिए सबसे पहले दीनी नॉलेज है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. मेरे लिए सबसे बड़ी दीनी नॉलेज ये है, ऑफ कोर्स along with our Quran and whatever the religious scripture is.
लेकिन जो अल्लाह ने कायनात बनाई है, जो कुरान में बार बार वो कहता है, तो अल्लाह की कायनात को समझना भी तो दीनी नॉलेज ही हुई ना। सो इस मेरा ज़हन इस तरीके से चलता है। आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई व्हाट योर क्वेश्चन इज। Okay, good, Wasif. Your favorite genre of literature? I love psychology and philosophy, two of my favorites. Thank you, Mavish. Your favorite genre of... I have already responded to your question. Okay. Tips on communication, Fahad. Okay. There can be verbal, non-verbal, written communication. What are you exactly talking about? Most of the time when people talk about communication, they're referring to verbal communication, and that too in English language. So one of the tips is, जब आप किसी सोल्जर को फ्रंट पे बॉर्डर के ऊपर लड़ने भेजते हैं, तो आप उसको आर्सेनल देते हैं, आप उसको गोलियां देते हैं, आप उसको गन्स देते हैं, आप उसको बॉम्ब्स देते हैं, जो उसका आर्सेनल होता है। इसीलिए जब भी आपने अंग्रेजी में बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। योर वोकैबुलरी इज योर आर्सेनल. So if you do not have a strong background, if you do not have a strong sense of vocabulary, you will never be able to converse and speak. So सबसे पहले अपनी vocabulary को strong करें, अपनी एक डायरी बनाएं जिसके अंदर वर्ड्स को नोट करें, न्यूज़पेपर के जरिए रोजाना अपना... मैं 15 साल तक रोजाना डिक्शनरी से 2 से 3 वर्ड्स ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस मैं 2 से 3 वर्ड्स नोट करके उनकी मीनिंग्स और सेंटेंसेस बनाता था। एंड वंस आई यूज्ड टू डू दैट, आई यूज्ड टू स्पीक अबाउट दैट विद माय फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्त कहते थे, तू आके जो है ना, जो तू सीख कर आता है वो हमारे ऊपर झाड़ता है। अब वो उस वक्त तो मैं हंसी में उड़ा देते थे बात, लेकिन उसका मुझे फायदा बहुत हो गया। ठीक है। So if you want to converse in English language, you need to have strong vocabulary, and then you need to converse. You need to practice a lot. ऐसे दोस्त बनाए जो आपके साथ कन्वर्स कर सकें। Okay, very good question. What advice will you give to Imran Khan if you have a chance to meet him? Okay, so मेरी एडवाइस इमरान खान को ये होगी कि इमरान खान विल शोरली कम टू पावर। ठीक है। इलेक्शन होंगे एंड इमरान खान विल विन एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। ठीक है। अब मैं बड़ा ही ए पॉलिटिकल होके बात कर रहा हूं। ठीक है। आई एम नॉट फॉलोइंग इमरान, आई एम नॉट फॉलोइंग एनीवन। ना मैं नवाज शरीफ के साथ हूं, जरदारी के साथ हूं, और ना इमरान खान के साथ हूं। पीपल हु फॉलो मी, दे नो मी। आई एम नॉट पॉलिटिकली ड्रिवन। लेकिन ये बात मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान पावर में आएंगे। ही नोज इट एज वेल। लास्ट टाइम इमरान खान ने जो बहुत बड़ी गलती की वो ये थी कि ही न्यू ही विल कम टू पावर, बट ही वाज अनप्रिपेयर्ड। उसने असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जिसकी 6 महीने के अंदर जबान बाहर आ गई। उसने कहा कि भाई मेरे से नहीं चलती है। एंड देन ही डिडंट हैड अ बैकअप प्लान। एंड देन ही पुट पीपल लाइक उस्मान बुजदार, जिनकी कोई ना वो बात कर सकते हैं ना कोई पर्सनालिटी, और पंजाब का चीफ मिनिस्टर। सो माय रिक्वेस्ट टू इमरान खान विल बी, you people will give you one more chance and people will expect from you। आपका जो अब ये वक्त है ना 2 से 3 महीने, इसमें तैयारी करें, अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी लेकर आए, अपनी जो रोजाना आप तकरीर करते हैं उसके अंदर लोगों को बताएं कि आप किस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करेंगे, आप किस तरीके से लोगों की जिंदगी को बेहतर करेंगे, उनको अस्पताल कैसे बेहतर करेंगे, उनको नौकरियां कैसे प्रोवाइड करेंगे, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है उसको कैसे बढ़ाएंगे, लोगों की लिटरेसी रेट कैसे बढ़ाएंगे हमारे मुल्क का। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ही नीड्स टू टॉक टू विद द पीपल। जो वो रोजाना की बेसिस पे तकरीर करते हैं ना, उसमें इनके ऊपर बात करें, पॉलिसी मैटर के ऊपर। हेल्थ के लिए वो क्या करेंगे, एजुकेशन के लिए वो क्या करेंगे, लोगों की रैशनैलिटी ऑफ थॉट बढ़ाने के लिए क्या काम करेंगे, लोगों का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो एक स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान होता है उसको कैसे बेहतर करेंगे, बच्चों की सेहत कैसे बेहतर होगी। ठीक है। लोगों का
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बेहतर होगा, प्राइस को कैसे कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को $25 बिलियन से $50 बिलियन कैसे करेंगे। ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, मतलब दिस इज मतलब आप भी यही बात सोचेंगे, वही बात मैं सोच रहा हूं, बट यही मैं एडवाइस करूंगा उनको। आई होप यू अग्री विद व्हाट आई हैव सेड। Okay. You can earn in dollars. Make a YouTube channel. You will earn in dollars. Okay. Hafiz Naeem, you're talking about Jamaat Islami? I don't know him, so I do not have any opinions. How to make physics strong? Physics, Dr. Robert Greene. नहीं. What's the name of the individual? एक मिनट होल्ड कीजिएगा. Professor Green. प्रोफेसर ब्रायन ग्रीन, हाँ, प्रोफेसर ब्रायन ग्रीन को सुने, अमेजिंग गाय फॉर फिजिक्स, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। यस, ही इज माय फेवरेट फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। वर्ड पावर इज गुड बुक। बेस्ट बुक, अच्छा जी। ओरिएंटलिज्म रीड किया है आपने? नॉट इन डिटेल, जस्ट सुपरफिशियल। टिप्स फॉर स्टूडेंट्स टू गेट इंटर्नशिप्स इन समर, दिस नीड्स एन आंसर। अगर आपके पास कला है, हुनर है, तो मैं आपको इंटर्नशिप दूंगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन एन ईमेल shahrukh@bookbuddy.com.tk and let me know what you're good at, and I'll try to give you an internship. Saying that only so time on reading, so just only start reading. देखिए, सेल्फ हेल्प बुक्स में ना होता ये है कि एक चीज को बार बार रिपीट किया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वट एवर यू थिंक यू कैन कंसीव, यू कैन अचीव, द कंपाउंड इफेक्ट, ये 4-5 चीजें अगर आपको पता है तो सेल्फ हेल्प बुक्स फिर आप नहीं पढ़ें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दीज थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड। सेल्फ हेल्प, मैंने सारी दुनिया का सेल्फ हेल्प लिटरेचर पढ़ लिया, लेकिन इकबाल से बड़ा सेल्फ हेल्प ऑथर है ही नहीं। आपको आपकी मोटिवेशन को आसमान पे पहुंचा देगा इकबाल, अगर आप इकबाल को समझ के पढ़ना शुरू कर देंगे। सर, व्हाट इज योर मोटिवेशन इन लाइफ? इट्स वेरी सिंपल, आई नीड टू ऑप्टिमाइज द टैलेंट। आई थिंक आई डोंट वांट टू बी पॉम्पस, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि मेरे पास एक स्पेशल टैलेंट है, ओके। और मुझे लगता है कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकता हूँ, तो मुझे इस टैलेंट को ऑप्टिमाइज करना है। और ये जो सोच है ना, ये मुझे 24 घंटे मोटिवेटेड रखती है, because I'm driven by a purpose in life and I'm moving in that purpose. So I do not need any motivation, because that's how I'm inbuilt. ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है कि I'm motivated 24/7. Which book should read to learn manipulate people? इरफान, इसके ऊपर जो मेरी पिछली वीडियो है, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, इन्फ्लुएंस के नाम से, रॉबर्ट सियाल्डीनी की, अभी पिछली वीडियो मैंने उसी के ऊपर की है। यू कैन रीड दैट बुक। शालू वालिया, मेरी फेवरेट फिक्शन बुक थी लॉलिटा एन एनिमल फार्म। सर, सजेस्ट अ बुक अबाउट गोल्डन इस्लामिक एज। फिरास अल खतीब की लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, ग्रेट बुक। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद से Muslims went up and they went down. What was the reasons they went up and what was the reason they declined? Amazing book, very good. अगर आपने पिछले 1500 साल का कोर्स एक किताब के अंदर करना है तो वो किताब पढ़ लें। फिर आसल खतीब की है लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री। Which is the first book to read of Allama Muhammad Iqbal?
देखिए, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा रिकंस्ट्रक्शन और रिलीजियस थॉट, लेकिन वो बहुत मुश्किल बुक है। वो आप पढ़ेंगे, आप खरीदेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। तो एक काम करें, मेरे लेक्चर सुने उसके ऊपर, उन लेक्चर्स को समझने की कोशिश करें और फिर किताब पढ़ें। शायद आपको फिर भी समझना है, बट कीप ऑन, जस्ट हैंग इन देयर। इट टुक मी 4 years टू रीड दैट बुक। सर जावेद अख्तर साहब के बारे में आपका क्या व्यू है? ब्रिलियंट लिरिसिस्ट, क्या कमाल के गाने लिखे हैं उन्होंने। डोंट यू थिंक देयर शुड बी पब्लिक लाइब्रेरीज इन कराची? यार देखो, ये इरफान, पब्लिक लाइब्रेरी बन भी जाएगी, कोई नहीं जाएगा वहां पे। दैट्स व्हाई आई वांट पीपल टू चेंज देयर थॉट प्रोसेस फर्स्ट। दे नीड टू लर्न टू इन्वेस्ट इन बुक्स। हम लोग पिज्जा बर्गर ब्रोस्ट खा लेते हैं 500 1000 रुपए का, हम लोग 500 रुपए की किताब नहीं खरीदते। पीपल नीड टू लर्न दैट दे नीड टू इन्वेस्ट इन बुक्स। जब तक आप खरीद के नहीं पढ़ेंगे, किताबों के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग समझते हैं कि यार हमने कोई चीज खरीद ली, हमने कोई प्लॉट खरीद लिया, हमने कोई बड़ी चीज खरीद ली, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है आपके ऊपर, व्हेन यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। एंड हाउ डू यू इन्वेस्ट? वन ऑफ द वेज इज थ्रू रीडिंग। एंड बुक्स कैन कॉस्ट यू मे बी 1000 1500 2000 रुपए, लेकिन उस 2000 रुपए से आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, Why Muslims are reading Quran without understanding it? Because जो मौलाना साहब हमें पढ़ाने आते हैं, उनको खुद नहीं पता कि कुरान की ट्रांसलेशन क्या है, कुरान का मतलब क्या है। I recently said to a मौलाना कि दुरूद शरीफ का जरा मतलब बयान करें, and he didn't know कि what's the meaning of the दुरूद शरीफ। तो उनको खुद नहीं पता। जो हमारे, मैं हमेशा अपने घर में ये रूल बना लें कि जो भी बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, वो कारी सेलेक्ट करें जो मीनिंग से, आप देखना जब आप कारी साहब को बोलेंगे ना कि यार इसको कुरान को ना मतलब के साथ समझाएं, वो आपको ऐसी गोली कराएगा, आप याद रखेंगे। बिकॉज ही डजंट नो कि ये कितनी अजीम किताब है, इसके अंदर कितना अजीम मैसेज है, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया। और वही सोच आगे ट्रिकल डाउन हो गई। जो खुदी का फलसफा है, माई वर्ल्ड इकबाल का, नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। खुदी का जो ये ब्रेथ टेकिंग और पाथ ब्रेकिंग फलसफा है, इसके बारे में मैं डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इन द कमिंग 10 days। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज वो काम ज़ारा काजी वो खुद नहीं कर पाते। जो काम लोग खुद नहीं कर पाते, वो फिर आपका मजाक उड़ाते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आप पूरी दुनिया ट्रैवल करें तो करें, बट यू नीड टू हैव द राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज। जस्ट डू नॉट ड्रीम, क्रिएट अ पाथ कि मुझे कितनी वेल्थ चाहिए, मुझे कितने पैसे चाहिए कि मैं दुनिया को घूम सकूं, एंड प्रूव पीपल रॉन्ग। इनविजिबल इन हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली पाकिस्तान हिस्ट्री, ओरिजिनल हिस्ट्री, बहुत कमाल की बुक्स हैं। एक आपने पढ़नी है फ्रीडम एट मिडनाइट, ओके। एक आपने पढ़नी है द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फिर एक आपने पढ़नी है जिन्ना, हिज सक्सेसेस एंड फेलियर्स एंड हिज रोल इन हिस्ट्री। दीज 3 बुक्स, अमेजिंग बुक्स। Sir, do you think the solution of our economic condition is socialism, Dr. Taimur? I really like Dr. Taimur Rahman. I have great respect for him, but I do not agree that socialism is a failed uh, phenomena, is a failed policy, it's a failed ideology, and it won't work. Any ideology will not work in Pakistan. याद रखें, नो आइडियोलॉजी। आप यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम लें, आप जो मर्जी कर लें, आइडियोलॉजी वो काम करेगी जो लोगों का सोच बदलेगी। ओके, आइडियोलॉजी हमेशा वो काम करेगी जो लोगों के सोचने का दायरा बदलेगी, जो लोगों की सोच को ब्रॉड करेगी, जो लोगों के माइंडसेट को चेंज करेगी, जो लोगों को कहेगी कि क्वेश्चन करो, डाउट करो, जो लोगों को कहेगी कि इंक्विजिटिव हो, बी क्यूरियस, बी इमेजिनेटिव, आस्क द राइट क्वेश्चंस, बी हार्ड वर्किंग। वो आइडियोलॉजी कामयाब होगी। अब वो आइडियोलॉजी कौन सी है? वो बुक बड़ी की आइडियोलॉजी है, वो उठा लें, या वो कोई और उसको नाम दे दें। ओनली याद रखें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए, इस्लामिक सिस्टम ले आए, सोशलिज्म ले आए, कैपिटलिज्म ले आए, पाकिस्तान में नथिंग विल वर्क अंटिल एंड अनलेस द पीपल एट लार्ज वोंट चेंज। ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी।
जावेद नामा पढ़े उनका बुक, अदर देन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकबाल, जावेद नामा इज गुड। अच्छा, एक और मैं बुक आपको रेकमेंड करता हूँ, ज़ीशान, जिंदा रूद। डॉक्टर जावेद इकबाल, जो इकबाल साहब के बेटे थे, साहिबजादे थे, उनकी बुक है जिंदा रूद, वो पढ़े। दैट्स एन अमेजिंग बुक, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स अ बायोग्राफी ऑफ अल्लामा इकबाल। थैंक यू इरफान। Acha, by the way, all of the people who are listening to me, you need to watch my video that I posted today. It's an amazing video. अगर आप सारा दिन अपने फोन के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो वो वीडियो आपको बताएगी कि क्या आप वाकई में अपने फोन के साथ एडिक्टेड हैं या नहीं। एंड देन आई हैव गिवन यू अ 30-day प्लान कि अगर आप इस एडिक्शन का शिकार हैं, आप हर वक्त अपने मोबाइल के साथ चिमड़े रहते हैं, तो किस तरीके से आप इस एडिक्शन से जान छुड़ा सकते हैं। And another message is my book is out, Readistan. It has got a great response. So people who haven't read it, they can buy it from libertybooks.com and get a 20% discount when they use the coupon code BookBuddy. Must read that book. It's a consolidation of 50 of the best books that I've read. So at the cost of one book, you get 50 books. It's with the name Readistan. Invisible. It's my 11th comment. You have not read any. I have read your 11th comment, Invisible. Shahrukh Nadeem and Taimur Rahman, both are my favorite YouTubers and personalities. आप दोनों की बीच एक difference है, but I really like both of you. Thank you. I also like Dr. Taimur Rahman. Very good, very nice thought process. बड़े अच्छे सोच के शख्स है। सोसाइटी को डॉक्टर तैमूर रहमान जैसे लोगों की जरूरत है। हमेशा अपने आप से सवाल किया करें यूट्यूब के ऊपर या जो, कि क्या शाहरुख की या डॉक्टर तैमूर रहमान को की पाकिस्तान को जरूरत है या नहीं। अगर आंसर यस है तो फिर उन लोगों को फॉलो करें, अगर आंसर नो है तो अनफॉलो कर दें। अगर आपको लगता है कि ये लोग पाकिस्तान में लोगों को बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान में सोच, पाकिस्तानी लोगों की सोच बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान के मुआशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दीज पीपल आर एक्सेप्टेबल। Sir, your thoughts on atheism in Pakistan? I don't know what's atheism doing in Pakistan, but for me, atheism, there is, याद रखें, there is God even in the atheism of atheist. और atheist को admire करें, क्योंकि वो ला इलाहा के पहले उसके ऊपर तो आ चुका है, वो मान तो चुका है, वो सब नॉनसेंस से हट चुका है कि there is no God, वो इसके ऊपर तो बिलीव करता है, there is अगली के ऊपर बिलीफ उसको करवाना है। अच्छा, आपका कोई फर्ज नहीं है कि आपने एनफोर्स करना है, उसके साथ बहसबाजी करनी है। He will himself, if he discovers, if he reads the right literature, he or she will eventually discover that there is some mechanism behind this, uh, behind the creation of this universe. So leave him alone. Do not belittle him. Do not deride him. Do not degrade him or her. वो एथिस्ट है तो है, उसको अपनी, वो अपना सफर खुद तय करेगा, और इवेंचुअली अगर वो सही रास्ते पे चलता जाएगा तो उसको सफर के एंड पे यही मिलेगा कि देयर इज सम ultimate reality behind all of this mechanism. Is there any book you recommend on how to deal with anxiety and depression? यार, मैं बहुत सारी बुक्स थी, मैंने शायद रिव्यू भी की थी, बट आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, शायद अभी आ जाए। द गैलेक्सी, yes, of course, read it long time back. Recommend a book on modern challenges. Thank you for being late. Futures is faster than you think. Homodius and 21 lessons for the 21st century. Zahir, I have given you 4. मेटावर्स के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल। सर, why we always want to change and people do not change ourselves? Because change is a difficult phenomena. अपने आप को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, अपनी सोच को सर, your opinion on Sandeep Maheshwari? I think he is the Indian YouTube motivational speaker ना, good guy, good people यार, अच्छे लोग हैं ये सारे। I was reading the book How to Breaking Up with Your Phone, but after your video I'm thinking I should complete reading. बस आप वीडियो ही देख लें। Who is your favorite journalist? I used to read Javed Chaudhary साहब, and I recommend all people to read that. No one is my favorite journalist. One book from Pakistani author
which you think is a must read. शालू वालिया, मन चले का सौदा, अगर आपको उर्दू आती है, मन चले का सौदा by अशफाक अहमद, must read book. सर प्लीज ये शेयर होता अबाउट जावेद अहमद गामदी साहब. गामदी साहब जो हैं वो एक बड़े ही सुलझे हुए पर्सनालिटी है, ठीक है. और हर वो शख्स मुझे पसंद आता है जो जिसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन मॉडर्न होती है, पॉजिटिव होती है. याद रखें, एक और मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आप लोगों से अभी. जब भी आप किसी सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर की बात सुने और उसकी बात को सुन के आपको डर महसूस हो, खौफ महसूस हो, एक एक बुजदिली का एहसास हो, एक 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 फियर हो, एक पेट्रिफाइड फीलिंग हो, यू बिकम एप्रीहेंसिव, आपके ज़हन में खौफ पैदा हो जाए, तो यूजुअली वो दीन वो नहीं होता जो एक्चुअली दीन का फलसफा है. वीज़ावी जब भी आप किसी ऐसे स्कॉलर को सुने जो हमेशा, जिसको सुन के आपको एक फ्रीडम फील होता है, आपको एक बड़ी सोच मिलती है, आपको एक बड़ा विजन मिलता है, आपका ज़हन खुलता है, आपकी सोच को परवान मिलती है, हमेशा वो जो दीनी स्कॉलर है उसकी बात को सुना करें. यही बात मैं हमेशा इकबाल साहब का रिपीट करता रहता हूँ कि जब आप इकबाल साहब को पढ़ते हैं तो आपको दीन के बारे में, कुरान के बारे में एक बड़ा मैसेज मिलता है, यूनिवर्सल ग्लोबल मैसेज, बड़ी बात, बड़ी सोच, बड़ी जिंदगी, बड़ी थॉट, बड़ा ऑप्टिमिज्म, डर नहीं मिलता आपको. सो हमेशा उन लोगों को फॉलो करें जो आपके जहन में बड़ी सोच को परवान चढ़ाए. Artificial intelligence will replace absolutely everything. Be prepared. Sir, what is your favorite nazm of Allama Iqbal? Iblis ki Majlis Shura. My most favorite. How to give a meaning to life when you don't feel anything? Again, it's a very great question. I will recommend two books on this: Man's Search for Meaning, The Conquest of Happiness. देखिए, जिंदगी का मकसद ही ये है कि आप अपनी जिंदगी के मकसद को पा जाएं. There are 2 days important in a person's life. One is the day he is born, and other is the day he realizes why he or she is born. So मेरा इसमें आपको सिर्फ एक मैसेज होगा कि keep on asking the right questions. Finally, a day will come when you will find कि this is my calling, this is my true north, this is where I have to go. Okay, and your action will cure your fear. What happened to him in recent days? Zakir Naik के बारे में क्या बताऊं आपको? Yeah, long time back, he's a good scholar, but um, he has amazing knowledge. He's very intelligent, but उसकी कुछ opinion से I don't agree with. That's what I can say. मर्डर ऑफ हिस्ट्री बाय के अजीज, ये वो बुक है जिसका मैंने रिव्यू किया था और बाद में हटा दिया था क्योंकि अननेसेसरली अच्छी बुक है वो. ओके, लेकिन वो अननेसेसरीली एक न्यूसेंस क्रिएट कर रही थी कि 14 अगस्त पाकिस्तान का बर्थडे नहीं है, पाकिस्तान का जो वजूद आया था वो मिडनाइट को हुआ था 14 और 15 की, विच इज ट्रू, बट एक अननेसेसरी न्यूसेंस हो रही थी. सो आई पर्सनली डिलीटेड दैट वीडियो फ्रॉम माय यूट्यूब. Which is the darkest book you ever read? Oh, good question. Darkest book? Hmm. I think The Prince, perhaps, by Niccolo Machiavelli. Okay. The Subtle Art के ऊपर मैं वीडियो कर चुका हूँ. How to forget someone whom you love so much, and then I'm so much depressed due to this. Just move on ahead, content writer. I move ahead in life. Keep on moving ahead. Your time will heal everything. That's just hang in there.
Do you think we should agree with everything that is written in anti-established? No, we should not agree with everything that Amar Ali Jan has written. We should have an honest analysis, and we should look at both sides of the coin, and then we should make our own opinion. Do you think we should agree with everything that is written in anti-establishment, like the book of? ये तो मैंने बात कर ली है. The Richest Man in Babylon book. ठीक है जी. So our 1 hour is over. Let me call it a day. And it was great to interact with you. ठीक है, जाऊं मैं या नहीं? To know you've got the motivation. Sir, you added value to my. This is the most beautiful comment by Muhammad Haris. Sir, you added value to my day. Isn't this so beautiful? That a Haris living somewhere in this world, and uh, I'm in some part of the world, and I'm adding value to his day. It's a beautiful feeling. The Richest Man in Babylon. Sahi hai. I found it an ordinary book. Sir, who is best in political communication skills? Bilawal, Mariam, or Imran, Nawaz, or Zardari? Shashi Tharoor. Sir, Jazakar, thanks for being there. Thank you for time. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, guys. Thank you. Yeah. What is the cause of this? I'll make a video about this, the sexual content addiction soon. ये मेरी उसमें है, book review list में है. Hmm. What lesson you learn from Iblis ki Majlis Shura? I've already. You can watch my video on this, Lukman. Which book have you read of the great Shashi Tharoor? The Why I am a Hindu, and एक और उसकी बुक है मुगल अपना ब्रिटिश एम्पायर के, द इनग्लोरियस एम्पायर. आई थिंक these two books I read. What's opinion on Narendra Modi? What happened to him in recent day? He changed launching bullet trains and investing in education. He's helping his country move ahead. Have you ever said namaz in your life? Good question. And why should I answer this question, by the way? It's isn't it something very personal? I've seen teenagers like me, young people. How did you become a book enthusiast? ठीक है जी. So goodbye, and I hope you have a great time, and I wish you all the best. I want कि आपकी जो भी wishes and desires and dreams and they come true, and you have a good and the most beautiful life, right? Goodbye, and keep on subscribing to Book Buddy. Goodbye.